All right. Hello, hi, good evening, everybody. I'm Anushri, your mentor, your teacher, and I welcome you to this brand new session of NEET 2022 one shot series. Yeah. So, as you know, we are doing wave optics today, right? And जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, wave optics is one of the most scoring chapters in physics. राइट चाहे आप नीट की बात कर रहे हैं चाहे आप जेई की बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आप आराम से स्कोर कर पाते हैं राइट okay so let's see first of all are you guys able to hear me properly tell me are you able to see me properly कौन कौन आया है आज हेलो इफात हाय आराध्या हेलो अभिजीत tell me am I audible properly am I visible properly give me a thumbs up if everything is fine. Hello Shruti. How are you guys today? Hi Shramila. Hi Vaishnavi. Hello Samriddhi. Hi Reena. Hi Ifat. Hi Deepu. Hi Bimal. Hello. All right. I can see that बहुत सारे thumbs up आ गए हैं और everything is good, right? So, अब विदाउट फर्दर अडू आई होप आप लोग एकदम अच्छे से बक अप गियर अप करके आए हैं राइट आप लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से देख रखी है राइट एंड देन राइट नाउ यू ऑल हैव वेल हैड योर स्नैक्स एंड यू आर गुड टू गो फॉर 1 hour 30 minutes okay that's what we are going to do today all right so without further ado let's start let's get ahead वेव ऑप्टिक्स हम चालू करने वाले हैं आज राइट और ना कि चालू खत्म भी करने वाले हैं राइट ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आज के वेव ऑप्टिक्स के सेशन में वन शॉर्ट सेशन में हम देखेंगे ये सारे सब टॉपिक्स राइट वील बी स्टडीइंग अबाउट हाइगेन्स प्रिंसिपल वील बी स्टडीइंग अबाउट इंटरफेरेंस Young's double slit experiment YDSE a very important experiment right then diffraction of light and then polarization of light okay so let's start let's move to the first part of today's session right Huygens principle now होता क्या है मतलब Huygens principle इतना important क्यों है क्या हो रहा है so first things first सबसे शुरू में right हमें लगता था कि well we figured out that light undergoes reflection, light undergoes refraction और उससे हमें लगता था कि लाइट जो है ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है और पार्टिकल्स के जैसे बिहेव करती है राइट न्यूटन गेव हिज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट राइट न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी but the thing is later on we figured out that there were certain scenarios where light was not following the rules that we thought it should follow right तो क्या हुआ कि well something had to be right कुछ तो आना था and that's where Huygens theory and Huygens principle came into being right so क्या होता है कौन से सिनेरियोज में लाइट जो है पार्टिकल की तरह नहीं बिहेव कर पा रही है let's see the basic idea here is that well if light is passing through a very tiny orifice right बहुत छोटे छोटे से छेद के थ्रू लाइट पास कर रही है तो अगर वो छेद if that orifice if that hole's dimensions are very big compared to the wavelength of that light right then it's going to go straight on and it's going to behave like a particle right straight जाएगी कोई दिक्कत नहीं है हमें well usual reflection usual refraction हमको आराम से दिख रहा है but the problem comes or the difference comes when light passes through an orifice or a hole which has dimensions comparable to the wavelength of light right अब उस समय हमें पता नहीं था कि लाइट वेव है इसकी वेवलेंथ होती है but we figured out कि अगर बहुत छोटा होल हो बहुत छोटा ओरिफिस हो तो उसके थ्रू लाइट जब पास करती है तो वो वियर्ड तरीके से बिहेव करती है ठीक है वो नॉर्मली नहीं बिहेव कर रही है व्हाट इज इट डूइंग वेल it is forming different types of patterns it's behaving like a wave and that is what we are going to study today ठीक है and इसमें to establish the wave theory of light wave behavior of light Huygens principle is a very important cornerstone okay all right
So let's see, let's understand what is Huygens principle and what are we talking about. So first thing that we'll define in Huygens principle is wavefront. Okay, so what is a wavefront by the way? अब आप यहाँ पे एक एनिमेशन है मेरे पास, इसको देखिए. Okay, I can see बहुत सारे और लोग भी आ गए हैं अभी तक, right? So ध्रुतन, विकास, प्रसंति, श्रेया, hello, hi Pooja, good evening. Do make sure you pay attention to each and everything here. Okay, we'll be learning concepts and practicing the applications as well. So यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे पहली बात तो ये कि अगर आप look at it as a wave that you can observe, right? तो पानी में अगर आपने छोटा सा पत्थर डाला तो क्या होगा, लहरें आएंगी, right? वो लहरें क्या हैं? Those are mechanical waves, right? That's a disturbance. Now जब ये disturbance आता है तो पानी में पत्थर डालने के बाद आपको circular disturbances मिलते हैं ये, right? ये circular disturbances are actually wavefronts, circular wavefronts. Now इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, right? तो हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चीज डिफाइन कर रही है इस wavefront को. The thing is, all the points on this circle, right? All the points on this circle are oscillating with the same phase. सारे के सारे points जो है ना same phase में हैं. Now, आप लोगों ने 11th grade में mechanical waves पढ़ रखी हैं, तो उनका basics आपको समझ में आता है, right? Okay. So phase of a wave आपको समझ में आता है कि कब phase 0 है, कब phase pi by 2 है, कब pi है, 3 pi by 2 है, 2 pi है, and so on, right? Okay. That's the only basic understanding that we need right now. Now, अब ये तो हमने समझ लिया कि all right, all the points on the wavefront have the same phase. तो how can we define wavefront then? We define it as the locus of all points of a medium which are vibrating in the same phase, right? ये wavefront हो गया एक locus. That's all there is to it. अब different types की wave will give you different types of wavefront. ठीक है? ये देख लेते हैं अब कैसे आता है. All right. So अब जब wavefront हमने define कर लिया तो हम आते हैं कि wave है तो किस डायरेक्शन में जा रही है and how can we figure out the direction of wave from a wavefront. ठीक है? So the idea here is that the direction of propagation of light wave is always perpendicular to the wavefront. ठीक है? Light wave or any wave for that matter हमेशा wavefront के perpendicular propagate करेगी, perpendicular direction में जाएगी. Okay? All right. So अभी ये सर्कुलर वेवफ्रंट के लिए हम देख लेते हैं कि देखो ये तो सर्कुलर वेवफ्रंट है और ये अगर वेवफ्रंट सर्कल है तो सर्कल के परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा. सो देखो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में ये जा रहा है. सी मैंने आपको एक टॉप व्यू भी दिखा दिया यहाँ पे. एज यू कैन सी दिस इज टैंजेंशियल, दिस इज रेडियल. रेडियल डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन है. ओके, राइट. Now, moving on, let's understand more about these wavefronts. कैसे form होते हैं, कैसे समझ में आता है, and so on and so forth, right? So, अगर हम large distances की बात करते हैं, ठीक है? So अभी तो आपने देखा कि भाई अगर point है, right? Point source है, तो उसमें से कैसे निकलेंगे? उसमें से circles निकल के आते हैं. 2D में देख रहे हैं तो circles निकल के आते हैं. 3D में देखेंगे तो sphere निकल के आता हुआ दिखेगा, right? So that is what is happening over here. As you can see, यहाँ पे अगर point source of light है, जैसे अगर हम sun की बात करते हैं, right? So अगर sun है, तो sun से अगर light निकल रही है, so then you can see that here we are going to get spherical wavefronts. But क्योंकि sun बहुत दूर है, right? So जैसे जैसे light आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको spherical wavefronts मिलेंगे, जिनका कि radius और बड़ा होता जाएगा. Right, these spherical wavefronts with increasing radius, very big radius, will end up looking like, see, plane surfaces, right? And that's where we say if the source of the wave is very far away, then at very far distances, the spherical wavefronts, they don't really look spherical anymore. They behave as plane wavefronts or plane wave. और आपको waves कैसी दिखती हैं? आपको direction of wave दिखेगी as parallel beam, right?
ओके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी हमने वही किया, अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही होती है तो हम उसे पैरेलल बीम लेके काम कर लेते हैं, राइट? दैट्स व्हाट इट इज. नाउ वेल, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है अगर पॉइंट सोर्स हुआ तो, राइट? बट व्हाट इफ देयर इज अ लाइन सोर्स? इफ देयर इज अ लाइन सोर्स वी गेट, yes, cylindrical wave fronts. Again the same fundamental, right? Line source है तो cylindrical wave fronts है, and again if this line source is also really far away, then again we get plane wave fronts. Is that fine? Okay. Bikash is asking what is wave front? बेटा wave front होता है locus of all the points that are on the same phase. ठीक है, ये अभी मैंने बताया था, सेशन खत्म होने के बाद आप बैक करके देखना, ठीक है? एंड लेट्स मूव ऑन नाउ. सो हमने समझ लिया कि भाई वेव फ्रंट क्या होता है, कैसे बनता है. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट्स व्हिच विल मेक अस अंडरस्टैंड फर्दर कि हम लाइट को अगर वेव की तरह देखें तो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे देख सकते हैं, राइट? ओके सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लर्निंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट लाइट, है ना? अब लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, दैट डज नॉट मीन कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो होगा, ठीक है? ऑलराइट, सो वी अंडरस्टैंड दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. एंड अनदर थिंग इज दैट अब वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट के बीच के डिस्टेंसेस अगर आप देखोगे, से फॉर एग्जांपल हियर, देन two wave fronts, distance between two wave fronts is the same everywhere. Alright? ये अगर point source of light है जिसमें से spherical wave fronts निकल रहे हैं, then here at this particular point and at this particular point these will be the same, right? As long as the source is stationary. Okay. So time taken for each ray from one wave front to another wave front, yes, it is the same. Speed भी change नहीं हो रही है तो distances भी same रहेंगे, ठीक है? All right. अब तक सबको सब समझ में आ रहा है, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग मोर. नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने वेव फ्रंट तो डिफाइन कर लिया, ठीक है? अब वेव फ्रंट डिफाइन करने के बाद एक और पॉइंट आता है हाइगन्स थ्योरी में, वो ये है कि हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे वी सेड कि ओके, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज गोइंग टू बी इन द सेम फेज, right? Now the thing is, Huygens theory says every point on the wavefront will now be treated as a secondary source. ठीक है, अब secondary source का क्या मतलब है? भाई सोर्स है तो अपने अपने वेवफ्रंट निकालेगा, प्राइमरी सोर्स है तो प्राइमरी वेवफ्रंट्स निकाल रहा है, राइट? प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, मेजर. सेकेंडरी सोर्सेस हैं तो वो सेकेंडरी वेवफ्रंट्स निकालेंगे, ठीक है? ये देखो यहां पे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, आपने देख लिया ये सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स. अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये सारे, राइट, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेस जो खुद एक छोटे से सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, ये अपने अपने वेवलेट्स देते हैं, राइट परमार, करेक्ट? ये अपने अपने वेवलेट्स देते हैं और इन वेवलेट्स के, राइट, इन वेवलेट्स का जो एनवेलप बनाता है, दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट वेव फ्रंट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, ठीक है? अब प्राइमरी सोर्स से अगर मुझे ये निकालना है, ये वाला वेव फ्रंट से निकालना है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल टेक nth wavelet from the secondary wave fronts and take an envelope. That's all there is to it. Envelope मतलब common tangent. ठीक है? So the common tangent to the secondary wavelets in the forward direction gives you the secondary wave front. Understood? बस इतना समझना है. ठीक है? Right. Now let's see कि Huygens principle को यूज करके हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे देख सकते हैं, उनके लॉज को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है? Now law of reflection, law of refraction तो Huygens principle से पहले आए थे, right? So there were laws. There was no way to prove it. We were always verifying it. Now here what we are going to do is we are going to look at the laws of reflection and refraction and see how it comes out from Huygens principle as well. So यहाँ पे अब देखो कि well there is a mirror, right? ये एक plane mirror है. Plane mirror में एक plane wave front आता है. ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट आता है मतलब एक बीम ऑफ लाइट आती है, बीम ऑफ पैरेलल रेज. अगर एक बीम ऑफ पैरेलल रेज आती है,
ठीक है. सो एक सेकेंड परमार, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन. ओके, नाउ यहां पे देखो, अगर बीम ऑफ पैरेलल रेज आती हैं तो यहां पे ये जो दो रेज आ रहे हैं, राइट, दिस इज अ वेव फ्रंट. दिस इज अ वेव फ्रंट, मतलब दिस इज वन रे कमिंग इन एंड दिस इज अनदर रे कमिंग इन. नाउ here the ray gets reflected over here. Here the ray takes equal amount of time to travel this much distance as this ray takes to travel this much distance, right? So अब यहाँ पे आपको basic geometry लगानी है, ठीक है. I won't go into details, but अगर आप basic geometry लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों जो triangles हैं, ठीक है, I'll erase my pen over here, but what you see is these two triangles, triangle AEC and triangle ABC, ये दोनों congruent है, ठीक है. अब अगर ये दोनों triangles congruent हैं, so by their congruency we figure out that angles I and R become equal, right? That means what have we got? We have got the first law of reflection, right? Exactly. Angle I is equal to angle R. Now, ये तो हमने देख लिया रिफ्लेक्शन कि भाई यहाँ पे जो वेव आ रही है, राइट, ये रे आ रही है, दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड दिस रे ओवर हियर, दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एज वेल. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑलराइट, परमार से साइड एंगल साइड, यस करेक्ट. SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. परफेक्ट. नाउ Devendra asks, ma'am, when can we use this derivation for boards also? हाँ बेटा, definitely you can use these derivations for boards. ठीक है, आपको अभी टर्म 2 के चैप्टर्स हम इसीलिए अभी कर रहे हैं. We shifted our syllabus and we are doing term 2 chapters over here so that you get dual benefit. ठीक है, आपकी नीट की तो प्रिपरेशन होती ही जा रही है, बट साथ साथ में टर्म 2 के जो चैप्टर्स हैं उनका भी डाउट क्लैरिफाई होता जा रहा है. सो या, एंड अभी इस सेशन में जितना कुछ भी हो रहा है उसका आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, ठीक है. यू विल गेट द नोट्स एंड यू कैन टेक दीज डेरिवेशंस एंड यस यूज देम इन बोथ्स. ओके, राइट. नाउ let's move on and let's see how refraction of light can be looked at, right? So refraction of light, maybe again we're doing the same thing. What are we doing? We're looking at a wave front and seeing what happens to the wave front. Okay. Now basic understanding of refraction is that, well, when refraction happens, right? When does refraction happen? Refraction होता है जब light goes from one medium to another. ठीक है. अब एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं दो मीडियम्स को? लाइट के टर्म्स में अगर हम देखें, ऑप्टिक्स के टर्म्स में अगर हम देखें, तो वी लुक एट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, राइट? ठीक है, ठीक है, डोंट गो इनटू बिग वर्ड्स, बट ऑप्टिकल डेंसिटी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाती है. किसी भी मीडियम की अगर ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है तो उसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कम ऑप्टिकल डेंसिटी है तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. ऑल वेल एंड गुड. Now, what happens is, if it's a denser medium, light is going to travel with less speed. And that is what we are looking at over here. ठीक है? So, light, as soon as it enters the denser medium, is going to travel with less speed. ठीक है? So, यहाँ पे अगर आप ये figure देखोगे तो आपको दिखेगा कि okay, plane wave front is coming, a parallel beam of light is coming. And as soon as it goes to the interface, right? It hits the interface. It hits the interface over here. Interface मतलब दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाला जो फेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. ओके, सो एज सून एज इट हिट्स द इंटरफेस, वी अंडरस्टैंड दैट एयर में और वैक्यूम में ये जो लाइट इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, राइट? एट द सेम टाइम इन द डेंसर मीडियम द लाइट इज गोना ट्रैवल स्मॉलर डिस्टेंस, राइट? If it travels smaller distance, that means when we go and form the wavefront on the other side, wavefront दूसरे साइड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम tangent लेंगे, common tangent, right? मतलब हम क्या करेंगे? This is the propagation direction. Direction of propagation के perpendicular में wavefront होता है. Perpendicular to these two lines will give me this wavefront, right? अब ये जो wavefront मिल गया perpendicular to these two lines, this tells me that
this is the distance traveled by the light in the same amount of time in medium 1, right? So ये कितना distance हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 into t, and ये कितना distance हो जाएगा? Distance traveled by the light in medium 2 in the same amount of time, which is v2 t, right? That's about it. अब आप इन दोनों distances को use करके, right? And आपके पास तो right angle triangles हैं ये. See, here is one right angle triangle, here is another right angle triangle. बस आपने इन दोनों distances को use किया, आपने right angle triangles को use किया और ratio of sin I to sin R निकाल लिया. ठीक है? बहुत simple है. अब जैसे ही आपने ratio निकाला ना sin I और sin R का, तो आपको ये दिखा कि sin I divided by sin R में v1t by AC and v2t by AC आता है. t AC gets cancelled out. Right? AC क्या है? Common hypotenuse है दोनों right angle triangles की. Right? Okay. So what has happened? We get sin I by sin R is equal to v1 upon v2. Ratio of speeds is actually reverse of ratio of, yes, refractive indices. Isn't it? Exactly. Here we go. Sin I by sin R is equal to n2 by n1, or rather mu2 by mu1, however you want to write it. Right? This is equal to mu2 by mu1, which is a constant. This is what Snell's law is, isn't it? There we go. Okay. Now that you guys have understood this, yeah, let's apply this, right? हम Huygens principle apply करेंगे एक question में, because that's what we do in physics, right? हम basics fundamentals समझते हैं और हम questions में apply करते हैं. So come on guys, buck up, get your pen and paper and solve this particular question. Question आपके सामने है, answers फटाफट chat window में डालिए, देखते हैं कौन पहले answer करता है. Yeah, I'll read the question over here as well. So क्या हो रहा है question में? Figure shows a plane wavefront refracted from air to water, right? ये दे रखा है. It's getting refracted from air to water using Huygens principle. The refractive index of water with respect to air is given by. And यहाँ पे हमें water का refractive index निकालना है. 4 options दिए हैं. As you can see, these options are in terms of A, B, C, D, E. And A, B, C, D, E are distances that are shown in the figure, right? So, A, as you can see, is this distance. B is this distance, right? C is this distance, which is AB, and D is this distance, and E is this distance. Okay? All right. I can see people have already started solving and people have already started posting answers. Ritvik answer कर रहे हैं A, Anu Verma says C. All right. अर्जुन को मिला है B. अच्छा A, B, C तीनों मिल गए अभी आप लोगों को. देखते हैं कौन सा आंसर आता है. और क्या मिल रहा है? हर्ष says hi. हर्ष क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट. Come on. Let's see. Hi, good evening सागर. चलिए आप लोगों को 2 मिनट देती हूं मैं. क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट और बोलिए मुझे क्या आंसर आता है. अभी हमने सीखा है फंडामेंटल और उसी फंडा को हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पे. ठीक है? ओके. पवित्र सेज डी. नितिन गेट्स ए. वैष्णवी को सी मिला है. विकास गॉट बी. प्रज्वल ए. अच्छा मतलब सबको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं. आप लोग तुक्के तो नहीं लगा रहा ना कोई? तुक्के नहीं लगाना है यहां पे. ओके. लेट्स सी. प्रज्वल सेज ए. Gorakhnath gets B. All right. Come on, quickly solve the question. Chalo. All right. Let's get to the solution now. Yeah. देखो एग्जाम में भी हमें 1-1.5 मिनट मिलता है मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए, beyond which we have to move on, right? So that's what we're doing. Let's see. Let's look at the solution now. So what's happening here? ये डायग्राम रिफ्रैक्शन थ्रू हाइगेंस प्रिंसिपल और रिफ्रैक्शन का डायग्राम है हाइगेंस प्रिंसिपल का, राइट? ये दे रखा है हमको. वी नो व्हाट इज हैपनिंग. अ प्लेन वेव फ्रंट इज कमिंग, राइट, एंड इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड. ऑलराइट, एंड वी नो स्नेल्स लॉ. वी नो sin I by sin R is mu2 by mu1, right? We also understand that these 2 points over here, right? यहाँ पे मैंने जो ये 2 points बनाए हैं,
ये दोनों सेम फेज में हैं, राइट? ये एक वेव फ्रंट पे है, मतलब ये सेम फेज में है. एंड दीज 2 पॉइंट्स ओवर हियर, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी सेम फेज में है, राइट? वेव फ्रंट्स हैं, वेव फ्रंट पे पॉइंट्स है, सेम फेज में है. मतलब क्या हुआ? दिस डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड एंड दिस डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड, इसमें फेज चेंज इक्वल हुआ है, राइट? ओके, सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है फ्रॉम, लेट मी गेट टू दीज पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स को मार्क कर देती हूं. दिस पॉइंट इज P, Q, R, S. ऑलराइट, नाउ फ्रॉम Q to R and P to S. Q to R ये जो ट्रैवल हुआ है ये μ1 into T है, एंड P to S जो ट्रैवल हुआ है ये μ2 into T है, राइट? Exactly. And now what are we applying? We're applying Snell's law, sin I by sin R, and there we go. Do you see? Sin I फिगर से क्या निकल के आता है? Here is a right angle triangle. This is sin I is B by C, right? And B by AB for that matter. And sin R is D by AB. Cross cancel किया AB और AB को over here. We get the ratio μ2 by μ1. Now, here it is given already that the refraction is happening from air to water. मतलब क्या हुआ? μ1 की वैल्यू 1 है, μ2 निकालना है. There we go. μ2 comes out to be B by D. Okay? Alright. B by D कौन सा ऑप्शन है? We can see option number C. जितने लोगों को भी C मिला है, good job guys, and the rest of you, you've understood how to solve the question, right? How to apply what you just learned. Great. Now, we are done with Huygens principle, and I can see a lot of people. Well, Parmar, great. Fazil, Mukul, these all got C. Mahesh also, nahi, Mahesh ko B mila. ठीक है. Guys, have you understood this? Give me a big thumbs up if you've understood this. And we'll move on from Huygens principle to the next subtopic of today's session. Okay? अच्छा, परमार सिंह, कुणाल ने भी सही आंसर दिया है. गुड जॉब कुणाल, आपने भी सही आंसर दिया है तो. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम Huygens principle to our next subtopic, which is interference of light. All right, now interference में अभी what we'll do is we'll look at interference through general idea of interference first. ठीक है, because जब हम interference की बात करते हैं ना, तो whether it is mechanical waves or electromagnetic waves, because well, light waves are electromagnetic waves, right? So whether it is mechanical waves or electromagnetic waves, the basic understanding of interference and the basic principle of interference remains the same. ठीक है? So आपने जो mechanical waves में पढ़ रखा है interference के बारे में, वो यहाँ पे काम आने वाला है. In fact, interference ना ऐसा बोगो टाइप का चैप्टर है, buy one get one. ठीक है? तो क्या होता है कि इंटरफेरेंस आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको मैकेनिकल वेव्स 11th ग्रेड के चैप्टर में भी काम आएगा उतना ही अच्छे से, और यहां 12th ग्रेड के वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी काम आएगा. ठीक है? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन इंटरफेरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हो क्या रहा है. यहां पे हम अगेन वी विल गो बैक टू द सेम इजी एग्जांपल दैट वी टुक ऑफ, वेल, पानी में एक पत्थर मार दिया तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, राइट? ओके, नाउ ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, यहां पे आपको दिख रहे हैं दो सेपरेट डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हुए, एंड उनके कारण ये जो सोडा कैन ऊपर नीचे हो रहा है, दैट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ वेव इट इज. ठीक है? सो ये पहले डिस्टर्बेंस के कारण सोडा कैन ऊपर नीचे हो रहा है, ये दूसरे डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, एंड नाउ इन द सेंट्रल मिडिल बिग फिगर व्हाट यू सी इज दोनों डिस्टर्बेंस एक साथ आ रहे हैं, और जो सोडा कैन ऊपर नीचे हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वो दोनों डिस्टर्बेंस की कॉम्बिनेशन के कारण कर रहा है, राइट? एज यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वेव्स गए, एंड लुक एट द ऑसिलेशन. डू यू सी दैट? It increases to a really big level, then goes down and so on. मतलब इसका amplitude टाइम के साथ चेंज हो रहा है, right? Now, when we look at these waves, ये तो आपको दिख रहा है कि पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब this is mechanical wave, right?
Now मैकेनिकल वेव को देख करके अगर आप इंटरफेरेंस समझेंगे तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज वी कैन सी देम व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड द ब्यूटी इज द फंडामेंटल रिमेन्स द सेम. सो अब जब आपने देख लिया कि कैसे हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स का जो एम्पलीट्यूड था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, राइट. सिमिलरली सेम थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होती है. इट्स जस्ट दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड ऑफ वेल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट. नाउ यहां पे हम देखते हैं कि हाउ वी आर अप्लाइंग दैट. ऑलराइट, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज द मेजर अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत बहुत सिंपल सा सिचुएशन है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज व्हेन टू और मोर वेव्स क्रॉस एट अ पॉइंट, देन displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves. ठीक है, displacement at a particular point, right? Now that displacement can be displacement of a particle in the medium, it can be displacement of, or rather electric field value or magnetic field value, okay, in case of electromagnetic waves. Doesn't matter, फंडा अभी भी वही है. क्या? Vector sum of the displacements due to the individual waves. Okay, let's see how that happens. आप vector sum कैसे कर रहे हो? So the thing is, here we are looking at sinusoidal waves, right? Sinusoidal waves मतलब the waves that in which displacement varies as a sine function, right? A sin omega t minus kx, ये हमने पढ़ रखा है, right? So ये पहली sinusoidal wave है. अब एक दूसरी sinusoidal wave है, राइट. एट एनी गिवन टाइम पहले का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2 है. व्हाट हैपेंस इज विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर. दैट्स ऑल. ठीक है, y net will be y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर विथ वन मोर विजुअल एग्जांपल. ठीक है, अभी मैथ में नहीं आए हम, पहले विजुअली इस चीज को लॉक कर लो, कैसा दिखता है, कैसा फील होता है. देन वी विल गो टू द मैथ सो दैट एवरीथिंग विल बी परफेक्टली लॉक्ड. ठीक है, लेट्स गो. यहां पे आपको दिख रही है दो वेव्स, राइट. हियर आई हैव गॉट टू सिनेरियोज इन विच सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज हैपनिंग ऑन वेव्स दैट आर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग. ठीक है, अब यहां पे आपको जो दिख रहा है ये दो पल्सेस हैं. फर्स्ट केस में ये दोनों पल्सेस में दे आर इन सिमिलर फेज, राइट, दे आर इन द सेम फेज. सो क्या हो रहा है, देखो यहां पे द पॉइंट वेयर दे इंटरफियर, राइट, द प्लेस वेयर दे इंटरफियर राइट नाउ, देखा कैसे डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा हो जाता है, राइट. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहां पे. ठीक है, वेक्टर सम जब आप कर रहे हो तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जा रहे हैं. अब द सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में इनके जो फेजेस हैं वो ऑपोजिट हैं. मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब ये मिलती हैं तो आप देखोगे कि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, राइट. सी नाउ हियर वी गो, डू यू सी दैट बीच में एक मोमेंट के लिए पूरी स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाती है, राइट. अब ये हमने पानी में भी देख लिया, हाउ द डिस्टर्बेंसेस गेट interfered with each other, right, they interfere with each other, how these waves interfere with each other. Now let's apply the same fundamental to light waves. ठीक है, electromagnetic waves. Before we do that, we'll define one small thing. ठीक है, what are coherent and incoherent sources? इसको define कर लेंगे, फिर हम और आगे स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में. So what is a coherent source? A coherent source of wave is two sources with same frequency, same wavelength and constant phase difference. ठीक है, मतलब क्या हुआ, दो waves हैं जिनकी same frequency है, same wavelength है, and the phase difference between them remains constant throughout. टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है वो. ठीक है, okay. These, as you can see, these are coherent waves. Okay.
सिंपल एग्जांपल आपको दिख रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड फेज डिफरेंस इज द सेम. नाउ if I talk about non-coherent sources, right, or incoherent sources, I'll say what happens is, इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर वायलेट करेगी तो वो कोहेरेंट नहीं रह जाएंगे सोर्सेस. ठीक है. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस कुछ भी वेरी कर रहा है अगर, तो दे आर नॉट कोहेरेंट. एंड हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे, बिकॉज आफ्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, आई टेल यू, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है इंटरफेरेंस में, हमने तो आपको बोल दिया वेक्टर एडिशन हो रहा है, राइट. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर तरीके के वेव्स में अप्लाई होता है. ठीक है. बट वी आर डूइंग कोहेरेंट सोर्सेज बिकॉज जो हमारा फाइनल वेव फॉर्म निकल के आता है ना, in case of coherent sources, that is also a sinusoidal wave, and that remains a sinusoidal wave. constant function रहता है वो, and that way उसका analysis करना अभी हमारे लिए, हमारी skills set के अंडर में आता है. जितनी हमने मैथ अभी तक पढ़ रखी है उसके अंडर में आता है, इसीलिए हम coherent sources के बारे में बात करेंगे. ठीक है. all right. now let's get to the math. ठीक है. तो मैंने आपको क्या बोला था, गेट विजुअल अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एंड देन वील कम टू कैलकुलेशंस. इसमें भी अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, एंड हियर आल्सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेव. ये मैकेनिकल वेव्स में भी होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होता है. इफ वी हैव टू वेव्स, y1 इज इक्वल टू a1 sin omega t minus kx and y2 is equal to a2 sin omega t minus kx plus phi, you can see that the two amplitudes are a1 and a2. These two are sinusoidal waves and the phase difference between these two waves is phi. ये दोनों waves के बीच का phase difference phi है जो कि constant रहा आता है. ठीक है. Okay. So what happens? आपने जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, y net is equal to y1 plus y2, वेक्टर एडिशन होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें थर्ड फंक्शन जो मिलेगा y net का, that will be another sinusoidal function with amplitude is equal to a net and the phase difference is equal to alpha. Phase difference with the first wave. ठीक है. इस तरीके का हमको फाइनल साइनसॉइडल फंक्शन मिल जाता है. ओके. कुछ लोगों को अब ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, थोड़ी ज्यादा मैथ हो गई. आई नो, हम नीट वाले लोग हैं, थोड़ी ज्यादा मैथ हो गई. नो प्रॉब्लम, आई टेल यू हाउ टू अप्लाई दीज. ठीक है. आपको सिर्फ दो रिलेशन यहां पे याद रखने हैं. ठीक है. वेरी सिंपल. पहला वाला ये है, रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 cos phi. एंड इफ यू रिमेंबर, दिस इज वेरी सिमिलर टू जो रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने याद किया था. यू रिमेंबर? बस वही है ये. ठीक है. सो a रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos phi एंड tan अल्फा इज इक्वल टू a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi. हमने जब रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे हम वेक्टर्स का, तो हमने ये फॉर्मूले याद किए थे. रिमेंबर? बस वही है ये, सेम एनोलॉजी. इजी वे टू रिमेंबर दिस. ठीक है. सो अब जब आप आते हो तो इसको यूज कैसे करते हैं. ठीक है. सो ए नेट हमको मिल गया, नेट एम्पलीट्यूड. अब जनरली भी हमें नेट एम्पलीट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है. ऑलराइट. ओके. इंडिपेंडेंट. हाँ, आप नीट वाले हो, आप बायो वाले हो, नो वरीज, आराम से फिजिक्स पढ़ो, बहुत ज्यादा मैथ में घुसने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इजी बना रहे हैं आपके लिए. सो हम दो तरीके के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं. क्या? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया आपको. क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव के केस में फेज डिफरेंस वाज 0, राइट. डिस्ट्रक्टिव के केस में फेज डिफरेंस वाज पाई. सो यहां पे अगर हम देखेंगे इसको, सो
कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, और यहां पे इस पूरी चीज का, इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos phi की वैल्यू 1 हो गई, मतलब थीटा phi इज इक्वल टू 2n pi। देयर वी गो। जब भी phi की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n pi होगी, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ then once we understand what the phase difference should be, we'll get the corresponding path difference। अब path difference कैसे पता चलेगा? देखो, path difference जो होता है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 5 फेज चलने के लिए, 5 फेज आगे बढ़ने के लिए वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ठीक है, वेरी सिंपल। 5 फेज आगे बढ़ने के लिए वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? नाउ सारी वेव्स 2 पाई फेज में लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। सो सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, 2 पाई फेज के लिए अगर लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं तो 5 फेज के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी? ये होता है आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस किसी भी वेव के लिए आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और रादर उल्टा लिख दे, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। देयर वी गो। सो जैसे ही आपने निकाला 2n पाई फेज डिफरेंस होना चाहिए, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। सिंपल। ऑलराइट, ऑलराइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करिए। डोंट वरी गोकुलनाथ, दोनों में बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। सो you will get the path difference right here. So path difference should be n lambda. ये चीज को ध्यान में रख लो। Whenever you want a constructive interference, you want path difference to be n lambda. Whenever you want destructive interference, again with the same fundamental, you want cos phi to be -1, phi to be 2n plus 1 pi, and delta x path difference to be n plus half lambda. ठीक है, n lambda and n plus half lambda. That's about it. We understand what happens in constructive, what happens in destructive, right? Now, we have understood what happens to the amplitude. Now we'll go to intensity of wave. ठीक है? And again, this also, mechanical wave में भी यही चलता है, electromagnetic waves में भी यही चलता है. ठीक है? So, intensity of a wave is directly proportional to the amplitude square, right? And using that, we can figure out how does net intensity come out. ठीक है, intensity is proportional to a square, I1 is equal to ka1 square, I2 ka2 square डाल देंगे. There we go. I net comes out to be I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. A good way to remember this is again using the vector formula. जहां जहां a square था आपने I लिख दिया, जहां जहां a था आपने root I लिख दिया. There we go. ठीक है? Now, another very simple case जो कि बहुत ज्यादा आता है, if we have both the waves having same intensity, right? If both the waves have same intensity, that means I1 equal to I2 equal to I, then we can apply this. Simplifying it, right? Half angle formula of trigonometry लगाने के बाद we get I net is equal to 4I cos square phi by 2, where phi is the phase difference between the two waves that are interfering. ठीक है? I hope this is all clear to you. What do you need to remember here? For intensity, you need to remember I net and then I net when the two waves have equal intensity. Okay? Alright, alright. Parmar says, ma'am, 2n plus 1 or 2n minus 1 in case of destructive. Beta, n integer है ना? So it doesn't really matter. आप जब 2n plus 1 में n को -1 रखोगे और 2n minus 1 में n को +1 रखोगे तो सेम वैल्यू आएगी. ठीक है? Okay. Integer है, so n is 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on and so forth. So you can take
2n plus 1 or 2n minus 1, doesn't matter. ठीक है? All right. Now, let's move on. अब एक और special case देखते हैं, ठीक है? Special cases, what happens is they come from the same basic result, but what we're looking at is, well, what happens when there is constructive interference happening with I1 equal to I2. So I1 equal to I2 तो था, right? So we got 4i into cos square phi by 2. Cos square phi by 2 में phi का value, sorry, cos phi का value 1 रख दो. That's all. ठीक है? We get I max equal to 4i. मतलब क्या हुआ? अगर if two waves of I intensity interfere, then the resultant wave in case of constructive interference goes 4 times intensity. Right? Okay. Path difference is n lambda, phase difference is phi, which is equal to 0 or plus minus 2 pi or plus minus 4 pi and so on and so forth. Okay? Alright. Hi Sagar. Alright. So, initial value formula में आप value of phi substitute कर दो, आपको ये मिल जाएगा. There we go. Now what? Destructive interference, again we're doing the same thing. Right? I1 equal to I2 and now here cos phi equal to minus 1. Once we substitute that, we get minimum is equal to 0. Okay? But now here, there are two things you need to remember. What? In case of I1 equal to I2, or rather, well, in case of destructive interference, net intensity is equal to root I1 minus root I2 the whole square. And in case of constructive interference, I net is equal to root I1 plus root I2 the whole square. Okay? This is also one thing you can just keep in mind. Sometimes you can utilize this directly. And now that we have learned these many concepts, क्या आता है? Tell me. Yes, we will apply, right? Because, well, competitive exams में वही तो चलता है. What do we need? We need to understand how to apply these concepts, and there we go. Quickly solve this question and tell me what the answer comes. Alright? जो अभी पढ़ा है बिल्कुल apply करना है हमें. I'll read the question for you. The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio of I max minus I min upon I max plus I min will be, where I max I min are, maximum intensity and minimum intensity. Okay? Chalo. Fatafat, tell me what the answer comes out to be. Alright, some people have already gotten the answer. I can see Aman Pandey, yeah, you got B. Alright, Deepu got B. मिलिंद राज गॉट बी. आप लोग काफी एक्साइटेड लग रहे हो मुझे, एक बार नहीं 4 बार टाइप कर रहे हो अपने लेटर्स. Awesome guys. All right. So Milind, Aman, Deepu, you guys have got the answer. Rest of you, come on. I'll give you 1 minute. Quickly solve the question. Quickly tell me what the answer comes out. Okay. Practice करते समय भी ना, I'll say that कि practice करते समय भी अपने आप को time करके practice करो, right? Do timed practice where you are giving yourself 1 minute per question. ठीक है? 60 seconds per question अपने आप को दिया करो. That will help you guys a lot. Alright, Gorkhnath gets 2 root n upon n plus 1. Alright, you're getting B basically. Okay, ये हमारे सर 5 बार करा चुके हैं. बेटा बहुत important concept है इसीलिए करा रहे हैं आपको. अच्छे से पकड़ लो. Alright, let's look at the solution now. I hope everybody has attempted by now, right? So, what is happening over here? Now, there is interference happening, right? And we have this ratio, right? I2 is to I1 का ratio n है. What do we have to find out? We have to find out I1 root I1, well, let's see, root I max, or rather, sorry, I max minus I min upon I max plus I min. ये निकालना है हमको. So, ये देखते हैं यहाँ पे. पहले तो I max निकाल लेंगे, फिर I min निकाल लेंगे, फिर substitute कर लेंगे. Right? Very simple scenario. Okay. So, वही करते हैं. I max निकाल लेते हैं, I min निकाल लेते हैं, substitute कर देते हैं. I max निकालने के लिए root I1 plus root I2 the whole square. I min निकालना है तो root I1 minus root I2 whole square and substitute. Right? So, once we substitute, we get
Well, root I1 plus root I2 whole square gives me 1 plus n plus 2 root n into I1, right? Minimum intensity ke liye root I1 minus root I2 whole square, and again you will have to do the reverse, right? So what do we get? We get 1 minus root n whole square times I1. Okay, now all we need to do is, well, substitute values, जो cancel आता है cancel कर देना है, and then we get the answer. Very simple, right? Okay, so Imax का value substitute किया, Imin का value substitute किया, denominator में भी substitute किया. Some things get cancelled out. Very simple math. The other things get cancelled out. There we go. Okay? All right. क्या बोल रहे हैं लोग? आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है? Let me roast it says, ma'am, chem is bore. बेटा chem की मत सोचो, आप physics क्लास में हो. ठीक है, physics अच्छे से पढ़ो, chem की क्लास में chem अच्छे से पढ़ना. Okay. Hello Shubh. Let's move on now. Let's see the answer. Yes, B is the correct answer. Most of you got B. Good job, guys. Okay, so tell me, till now, is everything clear? If till now everything's clear, give me a thumbs up, because now that we've understood interference properly, general interference हमको समझ में आ गया है, तो हम एक specific type of interference पढ़ेंगे अब. ठीक है? Till now everything's clear? Alright, so now we go to the next subtopic, which is YDSE, Young's double slit experiment, a very, very important experiment to understand interference of light. ठीक है? Alright, alright. Let's move on now. Let's understand YDSE. Parmar says Chamka. Great job. Okay, so I can see a lot of you are understanding properly. Chalo. So now YDSE में क्या हो रहा है? YDSE में हम deliberately interference करवा रहे हैं light waves का. ठीक है? Young's double slit experiment, as you can see. So first things first, as I told you before, right? Starting of the chapter में मैंने क्या बोला था? You remember? How did we start this session? By talking about behavior of light that becomes different if light passes through a very, very tiny hole, right? A very, very tiny orifice. And that is what is happening over here. That is what is created in this particular experiment. So what happens is there is a monochromatic light source, all right? Monochromatic, single wavelength, all right? Monochromatic. Mono matlab single, chromatic refers to, in this case, wavelength, all right? Monochromatic line source. Now, if there is a monochromatic source of light and you let light pass through two different slits, ठीक है? यहाँ पे ये दो slits के through pass हो रही है. Now, अगर ये दो slits की width जो है, right? ये बड़ी है. It's a pretty wide slit. Then what happens is light passes normally and ये आपको result निकल के आ जाता है. Very simple, right? But what happens is, what we do in this particular experiment is, and what Young did was, he reduced the width of the slit to a very, very small value. ठीक है? जैसे जैसे आप slit की width को reduce करते चले जाओगे, तो there will come a situation where instead of getting this, we end up getting this, right? Instead of getting two simple shiny pattern, we end up getting a fringe pattern, right? Light, dark, light, dark, light, dark, bright, dark की fringe pattern मिल जाता है. And this is where we understand कि light is not really behaving the way it should, right? Now, later on, after studying, we understood, yes, there is interference of light happening. Light is behaving like a wave here. Over here, light is predominantly, in this scenario, light is predominantly behaving as a particle, straight line particle behavior of light. But in the second scenario, light is predominantly behaving as a wave. Okay? Okay. दीपू मैम PDF नहीं मिल रहा है. दीपू आपको PDF नहीं मिल रहा है क्या? नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ठीक है?
After the session is done, you will get notes. Not right now. You won't get the notes right now. After the session is done, you'll get the notes. Okay? And all of you guys are in the Telegram channel that there is, right? Aakash BYJU'S ka NEET ka ek Telegram channel hai. Please join that if you don't have the link. And there also we end up giving notes. Okay? And a lot of different information as well. So please do join that. Alright. So what is happening? YDSE में हमें जो expected pattern था वो नहीं मिला, but rather we got a fringe pattern, right? Alright. Let's see how that happens, why that happens, and what is the amplitude, what is the intensity, right? उसका पूरा चलो postmortem करते हैं. Now, what is happening in Young's double slit experiment? As I told you, there are two slits and the distance between the two slits is small d. Now this distance is pretty small, it's in millimeters. And the distance between this plane where the two slits are and the screen on which we are capturing the fringes or capturing the pattern, this is capital D. And for our experiment, capital D is very, very big compared to small d. Small d millimeters में है, capital D जो है meters में है. Okay? Now, this is S1, S2, slit 1, slit 2. As you know, light passes through the slits. It starts behaving like, yes, it starts behaving like waves. So these are effectively wave sources. And these will be wave sources which are coherent. Why? Because इनका common source है ना. What did we do? We took a common monochromatic source and उसी source में से हम दोनों slits के through light pass करवा रहे हैं. So what happened? These are coherent sources. Coherent sources का जब हमने interference देखा, तो we understand what to do there as well, right? Superposition principle लगा के, math लगा के, we understand how to get the resultant amplitude, resultant intensity, when constructive interference happens, when destructive interference happens, right? वो हम सबको मालूम है. All right. Now, here, what we can understand is delta x will be the path difference at any particular point. Okay. So, okay. Let's backtrack. Let's see what's happening over here. Light comes from here, at any point on the screen. अगर हम इस point P पे देखते हैं screen पे, right? So at this point P on the screen, if there is interference happening, it is happening between two waves that came from S1 and S2 through these path, right? इन paths को follow करके S1 और S2 से जो waves निकल के आ रही हैं वो P पे मिल रही हैं और वहां पे उनका interference हो रहा है. Simple. So then, if we look at these two paths and we want to find out what is the phase difference of the light waves that are interfering at point P. अगर हमें उनका phase difference निकालना है, तो हमें उनका path difference निकालना पड़ेगा. Make sense? Because well, phase difference क्या है? The phase that the light covers when traveling a certain distance, right? Okay. So, पहली वेव ने कुछ फेज कवर किया, दूसरी वेव ने कुछ फेज कवर किया. उन दोनों का डिफरेंस विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय दीज टू. डिस्टेंसेस कवर्ड का डिफरेंस, राइट? ओके. सो अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे और हम बोलेंगे कि ऑल राइट, कैपिटल डी इज वेरी वेरी बिग कंपेयर टू स्मॉल डी, तो दिस बिकम्स काइंड ऑफ लाइक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड दिस डेल्टा एक्स. Okay, let me change the color. This delta x over here is actually the path difference that will tell you कि यहाँ पे interfere होने वाली lights के बीच में phase difference क्या है, which will tell you what is the intensity, is it constructive, is it destructive, and so on and so forth. ठीक है? Right. Parmar is asking, slit aperture length light के wavelength के comparative होगी? Yes. The aperture will be comparative to wavelength of light. Otherwise, interference will not happen. No, light will not behave like a wave. ठीक है? Yeah. So, let's get back. यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हमको समझ में आ गया कि हमें delta x calculate करना है. अब, again, applying basic geometry,
and applying the approximation that this theta is a very very small angle. ठीक है, थीटा मतलब ये P पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये एंगल बहुत छोटा एंगल है बिकॉज अगेन कैपिटल D इज वेरी वेरी बिग कंपेयर टू स्मॉल d. ठीक है, now not going into details right now, what I'm telling you is at the end of it delta x comes out to be yd by d, y into small d divided by capital D. This is what you need to remember. Okay, do remember this. After applying approximation, मतलब ये yd by d तब होता है जब capital D is very very big compared to small d. Then we get the path difference. As soon as we get the path difference, we get the phase difference. Why? Because phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. Substitute किया, ये हमारे पास phase difference है. ठीक है? Now what? इतना तक समझ में आ गया, तो अब हम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंटरफेरेंस लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ लिया ऑलरेडी. ठीक है, सो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है. वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. ओके, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वेल, intensity is maximum, it's a bright fringe, and delta x is equal to n lambda. We know this, right? Path difference is n lambda, and n matlab n is an integer, so 0 plus minus lambda plus minus 2 lambda and so on and so forth. And we already have delta x is equal to y d by d, right? Cross multiply, you get y is equal to delta x times capital D by small d. As soon as you get, यहाँ पे जब n lambda डालोगे तो आपको मिल जाएगा y of all the bright fringes. y of bright fringes मतलब y coordinate of, अगर ये central point को, ठीक है, ये central point को 0 लोगे तो ऊपर जाओगे तो प्लस y मिलेगा, नीचे जाओगे तो माइनस y मिलेगा. y gives you the distance of that particular point from 0. Okay? Now, y equal to 0 में क्या आता है? डेल्टा x equal to 0, डेल्टा x equal to 0 मतलब, yes, path difference 0 है, phase difference 0 है, maxima तो मिलेगा ही, and this is called central maxima because center पे है ना, right? Okay, there is another reason. Actually, central maxima is a point in the interference pattern where phase difference is 0. ठीक है? Phase difference 0 है. Alright, it need not be. काफी सिनारियोज में आपको सेंट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इसी एक्सिस पे नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने YDAC में क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें लगा दी उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए, वो क्वेश्चंस में होता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा इज अगेन द मैक्सिमम फॉर विच फेज डिफरेंस इज 0. ऑलराइट, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड दिस, yes, we have got y for all the bright fringes. y1, y2, y3, y4 क्या मिलेंगे आपको? फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम, इन सब की आपको पोजीशंस मिल जाएंगी. ओके, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. n इक्वल टू -1, -2, -3, -4 आपको नीचे के फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम मिल जाएंगे. ओके, ऑलराइट, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट डू वी डू? Again, apply the same funda of destructive interference. Destructive interference में क्या हो रहा है? Again, intensity is minimum. ये dark fringe आपको मिल रही है. And here as well, destructive interference happens when path difference is 2n minus half lambda by 2. Sorry, 2n minus 1 lambda by 2. And again, आप में से किसी ने पूछा था कि मैम 2n plus 1 ले लेते हो कभी कभी, 2n minus 1 ले लेते हो कभी कभी. Doesn't matter. You can take 2n plus 1 into lambda by 2. You can take 2n minus 1 into lambda by 2. Doesn't matter. ठीक है? n is an integer. Now, destructive interference के लिए, as you understand, there is no central minima. Right? Central minima नाम की कोई चीज नहीं होती. Right? So, there we go. First minima आएगा at a certain distance above the central maxima and below the first maxima. ठीक है, alright. So as soon as you start substituting values of n, no,
you will get minimas above the central maxima and you will get minimas below the central maxima also. ठीक है? Alright. So at the end of this, what is happening? You're getting fringes, you're getting a central bright fringe, बीच में bright fringe होती है, then you've got a dark, then bright, then dark, then bright, then dark, and so on. ठीक है? ऊपर भी वैसे ही होता है, नीचे भी वैसे ही होता है. This much is clear? Okay. अब हमने अगर पोजिशन की वैल्यूज निकाल ली तो क्या हम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजिशंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस इन पोजिशंस. अगर हम डिफरेंस इन पोजिशंस निकालेंगे तो हमें विड्थ मिल जाएगी ना फ्रिंज की. दैट्स व्हाट वील डू. वील से डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, राइट? Distance between two bright fringes will give me the bright fringe width, and distance between two dark fringes will give me dark fringe width. Okay, so यहाँ पे भी यही करते हैं. Y nth bright is this, Y nth dark is this, and now if I subtract, y2 minus y1 or y3 minus y2, I'm gonna get the width. And what comes out is, when you substitute and subtract, you get width of the bright fringe equal to width of the dark fringe. ठीक है? So what happened? Bright fringe and dark fringe both are of equal width. मतलब आपको equal separated stripes kind of fringes मिलती हैं. ठीक है? So beta comes out d lambda by d. Here as well, the same, capital D lambda by small d, and beta is the fringe width. ठीक है? अब इसको इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्राइट फ्रिंज विड्थ एंड डार्क फ्रिंज विड्थ, हम क्या बोलने लग जाते हैं इसको? हम इनको बोलने लग जाते हैं फ्रिंज विड्थ, क्योंकि ब्राइट और डार्क तो इक्वल है ना. ओके, वी अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन. लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर पोजिशन ऑफ फ्रिंजेस. ठीक है? अब देखो, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है. ठीक है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहां पे. एंगल वैंगल आ गए, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सी. ओके, नाउ एंगुलर पोजीशन मतलब क्या हुआ? लीनियर पोजीशन और लेंथ वाली पोजीशन की जब हम बात कर रहे थे तो हम y की वैल्यू की बात कर रहे थे, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एंगुलर पोजीशन, व्हाट वी रियली से इज this angle that the point P is making from the central line. Okay, that's all there is to it. Now when I talk about angular position, if I know the value of y and I know this is a right angle triangle and I know this is D, can I not calculate theta? Right? It's a right angle triangle, you know basic trigonometry, 10th tak to sabne trigonometry पढ़ रखी है. Of course we can calculate. We can say that tan theta is equal to yn upon capital D. And now we do one very simple thing. We apply small angle approximation. That's it. You apply small angle approximation, tan theta is approximately equal to theta. So I'm going to remove this from over here and say this is approximate. And that's it. You get angular position. Nth theta, nth bright is equal to y of nth bright divided by d. And y we've already calculated. That's it. Substituting value, this is what we get. Same thing goes on for the dark angular position. Angular position of dark fringes. So, same thing happens. Instead of y of bright fringe, you substitute y of dark fringe. This is what we get. Simple. So if you remember one relation, you can actually on the spot get the other relation if you forget. Okay? It's not that difficult. And now that we've understood this much, let's move on and let's talk about what happens when, well, we've talked about fringe width. So we can, in the same way, talk about angular position and then angular fringe width, right? That's it. Same funda. पहले हम लोग डिस्टेंसेस का डिफरेंस निकाल रहे थे, अब हम एंगल्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं. That's all there is to it. पहले हमने y2 minus y1 किया, right? फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए. अब हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे
angular fringe width निकालने के लिए. And just like before, when we subtract, we get a common constant value. ठीक है? Common constant value is what we get. There we go. Theta 2 minus theta 1 किया, in case of bright, in case of dark, we get lambda by d, and this is nothing but angular fringe width. And again, your regular fringe width na, beta, if you divide it by capital D, you're gonna get angular fringe width. Simple, no? Okay. I hope all this is clear to you now. Alright, let's move on. Let's talk about intensity. See, what have we done till now? We have learned about interference, and then we're applying all that we learned about interference in here in YDSC, right? General interference के बारे में जो कुछ भी पढ़ा. So, intensity क्या होती है? Now, in case of YDSC, we deliberately make sure that both the slits are identical. ठीक है? तो वो जो हमारा special case होता था ना, I1 equal to I2, that is what is applicable over here. We'll apply that. We'll say if I1 equal to I2, then I net is equal to 4I into cos square 5I2. And for constructive, phi is equal to 0. For destructive, phi is equal to pi. Right? Simple scenarios. आपको क्या मिल जाता है? आपको 4I मिल जाता है constructive intensity in constructive interference. In destructive interference, intensity becomes 0. What does that mean? It means that when the YDSC is conducted with both the slits of equal width and, well, अगर width बराबर होगी तो दोनों waves की intensity भी बराबर होगी, right? With equal intensity, we end up getting dark fringes as very, very dark fringes and bright fringes as really bright fringes. Is it fine? Okay. All right. This is the graph for intensity. Make sure you understand this. As you can see, at minima, intensity is becoming 0. At maxima, intensity is 4I. And yes, I know what you guys are thinking. बहुत सारे concepts पढ़ लिए, अब इनको apply कब करेंगे? अभी करेंगे, right now, right? Let's go. Let's move on. I've got a previously asked NEET question. Quickly solve this question and quickly tell me in the chat window what the answer comes out. Yeah? Apply whatever we've learned till now. And tomorrow as well, you know, we're going to have a quiz and we are going to apply all of what we're learning in today's session. So don't forget to join the quiz tomorrow. All right? 3 o'clock tomorrow, there's a quiz. Again, based on whatever we're doing today. That is wave optics. Come on. Now this question says, in Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance between the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes. Come on guys, very quickly. Yes, I can see a lot of you are getting the answer. Deepu got C. Aman got C. Crafty Bunny, I mean, you got pretty interesting names you guys have got, huh? Alright. Hello Crafty Bunny. You're getting C as well. Anu Verma got C. Alright. Pinky Kumari got C. Okay. Come on. Avantika got C. Chiku. What happened, Chiku? Do you have a question? Are you not understanding anything? Rajneesh, Mahesh. Okay, everybody's getting C. You can see that. Yes, with pun, you can see that the answer is C, right? All right, let's move on. Let's see. क्या कर रहे हैं हम? We are talking about fringe width, right? Fringe width क्या है? Fringe width is lambda d by d. There we go. Fringe width is lambda capital D by small d. Now, small d का value, capital D का value, ये change किया गया, right? So, what becomes? New fringe width, see? Distance between the slits is halved and the distance between the slits and the screen is doubled. मतलब क्या हुआ? अब new values को substitute करो, you get 4 times the original fringe width and there you go, the answer comes out 4 times, right? This is the answer. And do you guys see? कितना easy सवाल था ये, right? All you needed to understand was fringe width क्या होती है और
How does it depend on the distance between the slits and the distance between the slit plane and screen? There we go. As long as you understand this, apply the relation, get the answer. Understood? Okay. Chiku says, I am not understand. All right. What did you not understand, Chiku? All right. I can see a lot of you have understood this. I hope everybody is clear about this. What happens in YDSE and how we apply the concepts and solve questions. All right. Now, it's still not over, right? Let's understand more about optical path. Okay? Because the thing is, a lot of times, optical path ka concept and YDSE are clubbed together in a question and they ask. Right? बहुत favorite है ये. NEET में भी, JEE main में भी. So, let's see. The basic understanding here is, you know what path traveled by a light is. You know, as light or any other wave for that matter, as it travels, the phase keeps changing, right? For every lambda distance traveled, the phase changes by 2 pi. We know this much. All right. Now, if I talk about specifically light, then speed of light changes with the optical density of the medium. Medium change हुआ तो उसकी optical density change हुई, mu change हुआ, which is refractive index, then speed of light changes. Right. So if speed of light in a medium of refractive index mu is given by V equal to C by mu, then in different medium, light is going to travel different distances, but for the same value of phase change. Do you understand? Same value of phase change 2 pi के लिए, if in vacuum the light travels c distance, then in another medium it's going to travel another distance depending on the speed of light in that medium. And this is where, to understand the phase change of light traveling in different media, we need to bring them to a common platform. And that is why we talk about optical path. ये बात समझ में आया? Think about it. Same 2 pi phase change के लिए अगर medium 1 में light different distance travel कर रही है और medium 2 में different distance travel कर रही है, तो अगर हमें path difference निकालना हुआ तो हम उनको subtract नहीं कर सकते ना. They are not on the same scale. And that is why we bring them onto a common scale, which is distance traveled by light, or rather corresponding distance traveled by light in vacuum for that particular medium. ठीक है? Okay, you will understand more with the next slide. Let me go there. Okay, think about it this way. हमारे पास light है, 2 rays हैं. These are coherent, मतलब ये हमारे पास एक wave front है. इस point का जो phase है वही इस point का भी phase है. Let's call them P and Q. Right? Now, the thing is, for the same change in phase, ठीक है, light traveled through one medium, ये यहाँ तक travel किया इसने. But in vacuum, the light traveled till here for the same amount of change in phase. Let's say 2 pi का change होने के लिए. ठीक है, अगर phi value का change होने के लिए medium में, this medium में L travel किया और vacuum में L dash travel किया, then can we say that L in medium, this particular medium, is kind of equivalent to L dash in vacuum, right? That's what we talk about. So we will say that if light has traveled L distance in this medium of refractive index mu, then it is equivalent to traveling L dash in vacuum, and the optical path of this light will be mu L. Okay? Let me tell you this again. If light is traveling L distance in medium mu, then the corresponding optical path, the equivalent distance that it will have to travel in vacuum for the same phase change, will be L dash, which is
actually multiplication of mu with the current distance. अगर इसने L travel किया तो L into mu will be the optical path. ठीक है? Now, here we go. When we have to calculate path difference, it's good to calculate optical path difference, and we can say that if light is traveling L distance in a slab of medium mu, then we'll say path difference is equal to mu minus 1 into L. That's it. And now that we've got the path difference, we can find the phase difference, right? Phase difference is nothing but 2 pi by lambda into path difference. There we go. This is the phase difference. Is this fine? Now that we understand this, see, this is how it gets fitted into the YDSE. If we have a YDSE and we take a small slab of thickness T, refractive index mu, and put it in front of one of the slits, right? So what will happen then? What will happen is, the light, when it is passing through the slab, it will pass with lesser speed, it will pass slowly, and therefore, for two waves which have zero phase difference, they will not meet at this particular central point, but rather they will meet over here somewhere, right? Because of this slab, this length effectively will become smaller, and this length will be larger for light to cover the same amount of phase, so that at interference their phase difference is 0. So central maxima will actually shift upward toward the slit in front of which we have the slab. Okay? This is what happens. So is only central maximum shifting? No. What is shifting? The entire pattern is shifting by that much amount, right? And by how much is it shifting? We can say that कि ये जो shift होता है, this will come out, this will depend on the path difference that got created due to the slab. कितना path difference got created? Mu minus 1 into T. Then mu minus 1 into T into capital D by small d will be the shift that this entire fringe pattern goes through. ठीक है? Again, calculation, the same way we calculate Y. Okay? Alright. Now, यहाँ पे shift in central maxima कितना होता है and number of fringes that shift कितनी होती हैं. Do remember this. That's all I'll say right now. And then the same analogy, जितना आप questions को practice करेंगे उतना आप समझेंगे यहाँ पे कि the same analogy can be कि not only in front of one slit but you can have different kind of slabs in front of both the slits, right? और आप फिर जितना complicate करना चाहें इस question को उतना complicate कर सकते हैं. Right. I hope this is clear to you. Yes, Parmar is asking T is thickness of slab. Yes, T is thickness of slab. Mu is refractive index of the slab. Okay. These two shift in central maxima and shift in number of fringes. Do remember this. And with this, YDSE is done. Alright. Now, let's go to the next. And we'll talk about diffraction. Now, diffraction may be, again, very similar to interference. अगर आप उस तरीके से सोचो तो, not in actuality by the way. In actuality, diffraction is a very complicated or a very interesting subject to learn. Alright. But जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ तक हमारे syllabus की बात है, जहाँ तक हम, well, we are studying for NEET and board exams, right? जहाँ तक NEET की बात है, I will say, diffraction के जो आपके relations बनेंगे, जो analogy होगी, वो बहुत सिमिलर होगी इंटरफेरेंस के रिलेशन से, YDSE में जो आपने पढ़ा. ठीक है? ऑलराइट. सो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, डोंट वरी. Basically what happens is bending of light around corners or obstacles. When those obstacles are very small, it's a very apparent bending, बहुत overt bending होती है, and that is called diffraction at the end of the day. ठीक है? तो YDSE में भी actually जो आप देखते हो ना, बहुत छोटी स्लिट से लाइट निकल रही होती है, तो एक्चुअली उसका डिफ्रैक्शन हो रहा होता है वहां पे. राइट, आई लीव यू विद दैट. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस. सो हमारे पास, वेल एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन दैट आर स्टडीड लाइक एक्सटेंसिवली.
Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. ठीक है, Fresnel diffraction is not in our syllabus, I won't touch it, but Fraunhofer diffraction is actually in the syllabus, so उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम. ठीक है, right. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल स्लिट है या सिंगल ओरिफिस है, सिंगल होल है जिसके थ्रू हम लाइट को पास करा रहे हैं, एंड व्हाट वी विल गेट एट द एंड ऑफ इट इज अ सिमिलर स्क्रीन पैटर्न. हमको एक ब्राइट और डार्क का पैटर्न मिलेगा. ठीक है, दैट इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट वी गेट. सीधी सिंपल सिचुएशन. ऑलराइट, सो इफ आई हैव अ वेरी स्मॉल ओरिफिस, D is the diameter of the aperture, distance of the screen from the hole is capital D, and lambda is the wavelength of the light. Here as well, we are assuming that capital D is much bigger compared to small b. Okay, because small b though is comparable to lambda, no? It's comparable to wavelength. Okay, if that happens, then this is the kind of diffraction pattern that we get. All right, we get a central maximum, we get different maximums and minimums. Right, first maximum, second maximum, then we get first minimum, second minimum, and so on. ऊपर भी मिलता है, नीचे भी मिलता है. But थोड़ा difference है यहाँ पे. ठीक है, क्या difference है कि diffraction की जब calculations करेंगे ना हम, how to figure out the angular position of dark fringe और angular position of bright fringe. ठीक है, बहुत simple सी situation मैं आपको बता रही हूँ, analogy बता रही हूँ. Think about it like, अगर पहली स्लिट, अगर ये पूरा एक होल है ना, तो थिंक अबाउट इट लाइक इंटरफेरेंस हैपनिंग बिटवीन ये वाला फर्स्ट वाला वेव एंड ये वाला लास्ट वाला वेव. दैट्स इट. जैसे ही आपने ये अज्यूम किया ना, आपको बिल्कुल पैरेलल फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे. ठीक है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल एनालॉजी टू रिमेंबर फॉर्मूलेज. ओके, ऑलराइट. Diffraction in itself is a very different phenomenon than interference. All right. So what's happening is, effectively, it depends on the path difference between the extreme waves in this situation. So अगर path difference extreme waves के बीच में n lambda है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें dark fringes मिलेंगी. A sin theta is equal to n lambda. ठीक है, वहां पे D sin theta आता था, यहाँ पे A sin theta आ रहा है. You understand the difference? D was the distance between the two slits. यहाँ पे A है diameter of the hole. That's all. Nth dark. Now, here we will directly talk about angular positions. So, angular position of nth dark fringe is n lambda by A, and linear position of nth dark fringe is n d lambda by A. Simple, right? Y is equal to, or rather, theta is equal to y by d. YDSC में भी वही था, यहाँ पे भी वही हो रहा है. Okay. N is 1, 2, 3, 4 and so on and so forth. Right. I hope this much is clear. Let's move on. What happens in case of bright fringes? So, if the path difference between the extreme waves is equal to 2n plus 1 into lambda by 2, right? And again, it can be 2n minus 1 into lambda by 2 or 2n plus 1 into lambda by 2. मैं फिर से repeat कर रही हूँ, it does not matter. n की values आप appropriately substitute कर दोगे. So, once you have path difference equal to 2n plus 1 lambda by 2, again we get the same counterpart. What is the same counterpart? वहाँ पे d sin theta था, यहाँ पे a sin theta है, and this is again equal to 2n plus 1 into lambda by 2. Simple. So, applying the same funda, here also we get angular position of nth bright fringe and angular position or linear position of nth bright fringe. ठीक है, वहां पे भी यही हो रहा था, यहाँ पे भी यही हो रहा है. What is that? Well, everywhere theta is equal to y by capital T. ठीक है, remember one, you will remember all. Okay. This is about bright fringes and dark fringes. Let's see how it looks. Here is where the difference comes. ठीक है? In case of YDSC, we get the bright fringes to be of almost equal intensity. मतलब क्या? जो bright fringes है ना, वो equally bright मिलती हैं. चाहे आप first bright fringe की बात कर रहे हो या third bright fringe की बात कर रहे हो. Here the difference comes. Here you can see the central maxima has the highest intensity, and then first secondary maximum, that is
first maximum has lower intensity than that, second maximum has even lower intensity than that, and so on and so forth. ठीक है? अब ये क्यों आता है? Because when we actually do the mathematics and when we find out the intensity function, जो कि मैं यहाँ पे discuss नहीं करने वाली हूँ because it's not in the syllabus, but when we find the intensity function, this is how the graph comes out. ठीक है? It's a different function from YDAC का function. Alright, इतना ही बोलूँगी अभी. So again, you can see that, well, this is the kind of diffraction pattern that we get. Minimas bhi aate hain, between two maximum you will get minimum, and so on and so forth. So here as well, you get alternate bright and dark fringes. It's just that as you go away from the central maximum, intensity keeps decreasing. Okay? Another important factor here is that the linear distance between the two fringes does not remain the same. ठीक है? Linear distance between the two fringes does not remain the same. What happens? ये sin theta का function आता है. And only for theta being very, very small values, you get bright fringe width and dark fringe width as these values. Okay? Alright. So, what is the angular width? 2 lambda by A. Central angular fringe की value आ जाती है 2 theta, which is 2 lambda by A. Alright? I hope this much is clear. And now that we've understood this much, we know the relations, right? हमने concept भी समझ लिया, हमने relations भी समझ लिए. Let's apply them. Right? Okay. We'll apply. Let's go for a question. Come on guys, buck up. I know it's a long session. Yes, because we are doing a one shot. हम पूरा chapter एक session में खत्म कर रहे हैं. So, quickly solve this question. Quickly apply what we've learned. And let's move on from here. Come on. I'll give you 1 minute for this question. All right. Hey Parmar. I'm glad that you like the class. Do come to tomorrow's quiz. Okay? आज का जो सेशन है, इसके बाद आप NCERT टेक्स्ट से फिर से रिवाइज करिए एंड क्विज अटेंड करिए. क्विज में एक्चुअली पता चलता है अच्छे से कि हाउ मच यू आर अटेनिंग, हाउ क्विकली यू आर एबल टू अप्लाई, हाउ एक्यूरेटली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके? ऑलराइट. Anshita, hello. You're new, I understand. Quickly solve the question. Come on. Alright. It's a NEET 2016 question. Diffraction pattern due to a single slit width is A. The first minimum is observed at an angle 30 degrees when the light wavelength 5000 angstrom is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle of. And here, these are the angles that are in the option. Sine inverse half, sine inverse 3 by 4, sine inverse 1 by 4, and sine inverse 2 by 3. Now, one thing you will see over here is that first minimum is observed at the angle 30 degrees. Now, 30 degrees, that's the caveat here, guys. 30 degrees, is it a small angle? छोटा angle है क्या 30 degrees? No, it's not a small angle, right? There we go. We can't apply small angle approximation here. So, what will we apply? Yes, I can see people have got the answers. Anu Verma got A, Ashok got B, Myra got sine inverse 3 by 4. Okay. Let's see what the answer comes out, yeah? So, as you can see, first minimum is at 30 degrees, lambda is equal to 5000 angstrom. For the first minimum, A sine theta is equal to n lambda, right? I told you about that, A sine theta. Here, we can't say A theta is equal to n lambda because theta is a bigger angle. So, हमको sine theta लगाना पड़ेगा यहाँ पे. And that's what we do. We'll say theta is 30 degrees, substitute किया, sine 30 degrees का value half है. We get that, we get A is equal to 2 lambda. Once we get this, then again, we can talk about first secondary maximum. Right? Again, we know the relation. We know A sine theta will be, yes, n plus half into lambda.
n plus half into lambda, यहाँ n का वैल्यू 1 है because हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, so 3 lambda by 2 and a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, we get the value of sin theta comes out to be 3 by 4, theta is sin inverse 3 by 4. Alright, so what have we done? We've just substituted, yes, the path difference, that's it, right? Alright, in case of minima it was n lambda, in case of maximum it was n plus half lambda. We get the answer comes out as B, sin inverse 3 by 4. Understood? I hope you guys are understanding this properly, and yes, जितने लोगों ने ये अच्छे से solve कर लिया था, this was a tricky question, there was a small trick there. Pat yourself on the back if you got the correct answer. Okay, right now. And I hope you guys understood everything that we've done, because we are at the last subtopic of today's lesson. Alright, let's go. Last subtopic and the most easy one, which is polarization. Polarization में बहुत simple concept है. You have only two laws to look at, two simple relations to understand and remember. That's all. Okay? Actually, polarization goes again. Study of polarization is very, very exciting. आगे जाके जब आप पढ़ोगे. But आपके syllabus में बहुत छोटा सा है. ठीक है? So, what is polarization? Very quickly, guys. What do you think? What is polarization? Polarization क्या होता है? अगर हम electromagnetic waves की बात करते हैं, अगर हम light waves की बात करते हैं, तो you understand that electromagnetic waves where the electric field variation and magnetic field variation, or rather the plane in which the electric field is and the plane in which magnetic field is, are perpendicular to each other, right? Okay. So, vibrations of electric field and magnetic field are perpendicular, right? Transverse wave hai, light. Now, when we talk about a general source of light, right? Non-polarized source of light. कोई भी natural source of light देख लो. If you talk about a candle or you talk about sun or any other source of light, you will see that the waves that come out of that source, no, उसमें, although these two are perpendicular to each other, they will be perpendicular in different planes. ठीक है? And that is what a non-polarized light is. See? कुछ waves में electric field will be in this direction, कुछ में it will be in this direction, and some it will be in this direction, and so on and so forth. So when we talk about light coming out of any natural source of light, the electric field and corresponding magnetic field, they'll be perpendicular to each other, but then they'll be in all the different planes out here, perpendicular to the propagation of light. ठीक है? That is what a non-polarized light is. Now, if we do something, right? If we do something, light passes through something and it comes out where all the electric field, right? All the different waves have electric field vectors in a single plane and magnetic field vectors in a particular plane perpendicular to electric field, then it is called a polarized light. Okay? Then it is called a plane polarized light. That's what it is. Yes, Parmar says altu faltu lights ko filter karna, correct. So that's what we talk about, plane polarization, and plane of polarization is the plane containing electric field and direction of propagation. ठीक है? तो अब electric field और magnetic field दोनों है ना, तो दोनों में से किसी को तो importance देना पड़ेगा, तो हम electric field को importance दे देते हैं. ठीक है? Easy way to remember that. Now, how do we polarize such a light? What happens to the intensity? Right? Polarization में आपके syllabus में understanding about difference in intensity is there. ठीक है? तो क्या होता है? How do we get polarized light? Well, unpolarized light होती है, polarizer के through जाती है. Now, polarizer can be different materials, and we get a polarized light. ठीक है? Short, simple तरीके से समझो तो ये है. And yeah, you're restricting the vibrations of electric field in one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. अगर propagation is direction में है, तो you are taking this particular direction, this particular plane, and restricting the direction of electric field. And once you restrict the direction of electric field, you're restricting the direction of magnetic field also, no?
right? That is what it is. Now, what happens to intensity? This is where Malus law comes into the picture, right? One of the important laws. So, Malus law क्या कहता है? अगर हमारे पास unpolarized light है और polarizer के through जाती है, तो, well, I naught cos square theta is the intensity that comes out of it. ठीक है? Simple भाषा में हम समझते हैं इसको. दो parts हैं इसके, ठीक है? एक तो पहले मैं आपको statement बता देती हूँ अच्छे से. When a completely plane polarized light is incident on an analyzer, the intensity of the emergent light varies with the square of the cosine of the angle between the transmission axis and the light that passes through the analyzer. Right? Transmission axis is this, right? And, transmission axis is this, and this is the direction of, or rather direction of electric field of the plane polarized light. Okay. यहां पे जब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है. ओके, वी नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स हियर. व्हाट आर दोस? अगेन skimming the surface, telling you the important things. Two things. One, if there is a non-polarized light, completely non-polarized light that is passing through a polarizer, then the intensity which was I naught before, for a plane polarized light, it will be I naught by 2. Okay, that's about it. That is the first thing. The second thing is, if a plane polarized light, एक बार polarization हो चुका है, it is a plane polarized light, is passing from one polarizer to another polarizer, right? There was unpolarized light, it passed through one polarizer, got polarized, intensity हो गई half. Now, if light further passes from one polarizer to another polarizer, then the final intensity depends on this angle. ठीक है? And what is the final intensity? It is I2 is equal to I naught by 2 cos square theta by 2. There we go. And that was Malus law. Let's come to Brewster's law. Again, Brewster's law is a very, very simple situation. Okay? Although it's a law, समझना बहुत इजी है. तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या बात करता है? ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट्स के बारे में बात करता है. ठीक है? सिंपल सिचुएशन है. डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यस. At a particular angle of incidence, when reflected ray is perpendicular to refracted ray, then reflected ray is plane polarized. ठीक है? What does that mean? The reflected ray is going to be plane polarized at one particular angle itself. ठीक है? Only at one particular angle, which is called Brewster's angle, by the way. ठीक है? What is the Brewster's angle? The angle of incidence, I, for which reflected ray is perpendicular to refracted ray. That's it. ठीक है? So, ये तो I है, right? ये है R, and as you can see, this is 90 degrees. So, R क्या हो गया? 90 minus I. Because this is also I, this is also I, right? R और I जो है वो complementary angles हैं, and when we apply Snell's law and substitute R is equal to 90 minus I, we end up getting, instead of getting sin I by sin R, we get sin I by cos I, which is tan I. Tan I comes out to be mu, and I comes out to be tan inverse mu. ठीक है? Easy way to remember. Again I'm telling you, Brewster's angle का value क्या आ जाता है? Tan inverse mu. मतलब क्या? The angle for which the reflected light is going to be plane polarized light. Is this fine? That's about it. That is polarization. You need to remember two things: Malus law and Brewster's law. Okay? अब आसान भाषा में आप लोगों ने समझ लिया है. So let's apply this in a question. Come on, last question of the session, guys. Quickly apply this and tell me what the answer comes out. Unpolarized light with intensity I naught passes through a polarizer and then through a second polarizing filter, which is an analyzer, with an angle of 30 degrees relative to the first one. What is the final intensity of light? Come on. What is happening here? You've got unpolarized light that is passing through the first polarizer first,
And then from the first polarizer, the light is passing through the second polarizer, right? So, come on, quickly solve the question. Tell me what comes out. What does the answer come out? Come on guys, quickly tell me. A, B, C or D. Simple formula application हो रहा है यहाँ पे. Alright? Okay, alright. यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आप लोगों को कि क्या हो रहा है, right? Okay, Bikash got A, Avantika got C, Ashok A, Nandan A, okay, Deepu A. बहुत सारे लोगों को A मिल रहा है, कुछ लोगों को C भी मिल रहा है. परमार got C, Suman C, Avantika A, alright. 3/8, हाँ? Let's see. So, मैंने आपको क्या बताया था? There are two parts, two things आपको याद रखनी है मैलिस लॉ के बारे में. पहली तो when there is an unpolarized light that is passing through a polarizer, intensity becomes half. हो गई intensity half. Then what? If it passes through the second polarizer with angle 30 degrees, आपको I0/2 cos square theta में substitute कर देना है. Let's do that. क्या निकल के आ गया आपके पास? I2 is equal to I1 cos square theta, which is I0/2 cos square theta. There we go. I2 comes out to be 3 I0/8. Right? Theta is 30 degree, cos theta is √3/2. Square कर दिया, substitute कर दिया, we get the answer. There we go. So, the answer comes out to be A, 3 I0/8. And with this, we will end this session. So, do come tomorrow at 3 o'clock for the quiz and be prepared. We are going to rock it. We are going to apply whatever we have learned. And with this, I will say goodbye. Happy learning.